Hello everyone. Welcome to e-learning of OCM's lecture. Okay, in our last lecture we have started with functions of commercial bank. Yes, in that we saw primary functions of commercial bank. Yes, there are two types or there are two functions of commercial bank. One is primary function and second one is secondary function. Okay. In our last lecture, we learned about primary function. What are primary function? In that, there are sub points. That is, in primary function, the function is accepting deposits, means taking money from public and granting them loans or giving them loans. This is primary function of commercial bank. Okay, and today we are going to learn about secondary function of commercial bank. Okay, in secondary function, there are two types, okay? Agency function, we are going to learn it today. Agency function means here bank behaves as a agent. Okay, here in agency functions, the function is related to bank behaves as a agent of customer. Okay, and next one is utility function. I hope you can see it on your screen. Utility function. Okay, these are the two types which we are going to learn today in secondary function. As I told you in the last lecture that functions of commercial bank is very important. It is surely will come in your exam. Okay, so today we are going to learn about secondary function, that is agency function and utility function. So let's see, let us proceed with the PPT. Let's see what are the agency functions of secondary function of commercial bank. Just give me a minute. Okay. As you can see it on your screen, secondary function, the functions are agency function and utility function. Yes. So let us see what are agency functions. The commercial bank acts as an agent or representative of its clients and performs certain functions as follows. Let's see. Here it is given. Bank acts as an agent. Acts as an agent means agent of customer, representative of customer. On the request of few students or many students, I'll be teaching in both the languages, English and Hindi, because many children don't understand much of English. So for them, I'll be explaining in Hindi also. Okay. So first फंक्शन ऑफ एजेंसी फंक्शन इज, हम यहाँ पर देखेंगे कि बैंक क्या क्या करता है. बैंक का सेकेंडरी फंक्शन है एजेंसी फंक्शन. ओके, अब एजेंसी फंक्शन में बैंक हमने पढ़ा कि एजेंट की तरह बिहेव करता है, बट एजेंट की तरह बिहेव करके बैंक करता क्या है. सो लेट्स सी. फर्स्ट वन इज पीरियोडिक collection and payments. Okay, periodic collections and payments. Commercial bank collects salary, dividend, interest and any other income periodically. Periodically means कुछ टाइम के बाद, जैसे 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद. Okay, as well as make periodical payments such as taxes, bills, premiums, rent, etc. on the standing instruction provided by the customer. Means you are a customer and you request bank for all these functions, for all this help. Okay, bank will collect your salary will be collected by bank, means your salary will be credited in bank, your dividend will be credited in your bank, your interest will be credited in your bank. Okay, आपका जो अकाउंट है उसमें आपकी सैलरी आ जाएगी. जैसे अगर कॉलेज में काम कर रही हूँ तो मेरी सैलरी बैंक में आएगी, तो वो कौन सा फंक्शन है? एजेंसी फंक्शन. ओके, तो सैलरी बैंक में आती है, जो डिविडेंड हमको शेयर्स के ऊपर, जो इंटरेस्ट हम बोलेंगे मिलता है, जो शेयर्स के ऊपर डिविडेंड हमको मिलता है, वो क्या मुझे कैश मिलेगा क्या?
Will company pay to me in cash? No, that company will credit that amount in my bank account. Okay, that amount in my bank account as dividend, interest, जो मुझे interest आ रहा है. ऐसा कि सपोज कि मैंने डिपॉजिट किए है बैंक में, मैंने मेरा पैसा रखा है बैंक में, तो क्या बैंक मुझे 6 महीने के बाद फोन करके बुलाएगी क्या कि आप आपका पैसा लेके जाओ आके? नो, बैंक विल क्रेडिट दैट अमाउंट इन माय बैंक अकाउंट. ओके, बैंक वो पैसा कहाँ पर क्रेडिट कर देगी? मेरे बैंक में. ओके, अब ये तो हुई कि हमें जो पैसा मिलने वाला है, ये तो हुई बात, जो हमें पैसा मिलने वाला है, जो कलेक्शन मिलने वाला है, whatever we are whatever money that will be credited in account, okay, that will come in bank account. Next we'll talk about debit, जो हमारे अकाउंट से घटेगा, जो हमारे अकाउंट से कटेगा. ओके, क्या क्या हमारे अकाउंट से डेबिट होगा? टैक्सेस, बिल्स, पेमेंट, प्रीमियम्स, रेंट. जैसे मुझे किसी को पेमेंट देना है, मुझे हर महीने मेरे मकान मालिक को पैसे देने हैं, तो डायरेक्टली मेरे अकाउंट से वो पैसे कटकर उसके अकाउंट में चले जाएंगे. ओके, मुझे कोई बिल्स पे करना है, जैसे मुझे मेरा फोन बिल पे करना है, मेरा लाइट बिल पे करना है, इलेक्ट्रिक बिल, यस, तो वो सब कहाँ पर जाएगा? मेरे अकाउंट से ही कट होके जो सामने वाले का अकाउंट में चला जाएगा. दैट अमाउंट विल बी डेबिटेड फ्रॉम माय बैंक अकाउंट टू द रिसीवर्स अकाउंट. ओके, but I need to give instruction to the bank for doing all the debit and credit procedure. मुझे बैंक को बताना पड़ेगा, मुझे बैंक को पहले ही बोलना पड़ेगा कि जो मेरा पैसा है वो आप, जो मेरी सैलरी आएगी वो मेरे अकाउंट में आने चाहिए, और जो मेरे बिल्स जाएंगे वो मेरे अकाउंट से जाने चाहिए. We need to give instruction to bank. Okay, then only bank will perform this periodic collection and payment function. हमें पहले बैंक को बोलना पड़ता है कि मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आएगी, या फिर जो मेरे बिल्स वो मेरे अकाउंट से कटेंगे. ओके, तो भी बैंक वो जो प्रोसीजर है वो करेगा, वरना वो नहीं करेगा हमारे परमिशन के बिना. ओके, बैंक विल नॉट डू दिस फंक्शन विदाउट द कस्टमर्स परमिशन. Commercial banks charge certain fixed amount quarterly or annually on the form of service charge from customer for providing such services. Yes, bank charge money, bank charge certain amount for doing all this job, for doing all this function. Okay, बैंक जो है वो हमारे काम कर रहा है, हमारी सैलरी ले रहा है, हमें जो डिविडेंड आ रहा है वो ले रहा है, हमारे बिल्स पे कर रहा है. बैंक इज पेइंग अ बिल, बैंक इज गिविंग अ सैलरी फॉर फ्री? नो, बैंक विल चार्ज मनी फॉर दैट. बैंक उसके लिए पैसे चार्ज करेगी, उसके लिए हम पैसे बैंक को देने पड़ेंगे. ओके, नेक्स्ट इज portfolio management. So what is portfolio management? Large commercial banks undertake to purchase and sell securities. Securities means shares, bonds, debentures on behalf of clients. Okay, जो बैंक है वो कस्टमर के तरफ से जो शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स खरीदता है या बेचता है, उसे हम क्या बोलेंगे? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ये फंक्शन भी बैंक करता है. दिस फंक्शन इज ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय बैंक, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. इट परचेज सेल्स एंड इट सेल्स शेयर on the behalf of customer. This handling of securities is known as portfolio management. Due to this facility, more clients are opting for such services of commercial bank. Because bank perform this function, because bank perform this portfolio function, many clients, many customers are attracted towards commercial bank's function. Okay, बैंक का ये फंक्शन है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसीलिए बहुत लोग बैंक में अपना जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के फंक्शन की वजह से अपना अकाउंट ओपन करते हैं, ताकि उनके शेयर्स और डिबेंचर्स बैंक खुद ही लेन देन करता रहे. ओके, नेक्स्ट इज फंड ट्रांसफर. कमर्शियल बैंक प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच और ब्रांच टू अनदर ब्रांच. कमर्शियल बैंक कम्स विद वेरियस इनिशिएटिव्स टू मेक देयर ट्रांसफर हैसल फ्री. वेरी इंपॉर्टेंट, फंड्स जो है हमारे ट्रांसफर होते हैं, जो हमारे पैसे हैं वो एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर कर. अब जैसे कि मेरा अकाउंट SBI में है, आई एम हैविंग माय बैंक अकाउंट इन SBI. ओके, सो इज दैट अ रिस्ट्रिक्शन दैट आई कैन नॉट ट्रांसफर माय मनी
in Punjab National Bank account. Suppose my friend is there and she is having account in Punjab National Bank. अगर मेरी friend है और उसका account है Punjab National Bank में और मेरा account है SBI में, State Bank of India में, दो बैंक है यहाँ पर, SBI and PNB. So, am I able to transfer my money to PNB's account in my friend's account? Yes, because bank is providing this function, fund transfer, कि हम एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में या फिर एक बैंक से दूसरी बैंक में भी हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. Okay, this is secondary function of commercial bank, that is agency function. Next is dematerialization. इसका short form है DMAT account. Okay, dematerialization. So what is given about it? Bank provides dematerialization facilities to their clients to hold their securities in an electronic form. Security, as we learned, securities means, here you can see on the second line, securities such as share, bonds and debentures. Yes. So जो हमारे shares, bond, debentures है, whatever our shares, bonds and debentures are there, that is converted into electronic form. Okay, that is converted into dematerialization. Means we are doing dematerialization of it. Means we are converting it into electronic form. हम उसको electronic form में convert कर रहे हैं. Okay. On behalf of clients, it undertakes the electronic transfer of shares in case of purchase and sale. Yes, हमें क्या करना है, हमें अपना जो भी अकाउंट है ओपन करना है, उसमें से हमें अपना शेयर्स बेचने हैं या शेयर्स खरीदने हैं. मतलब ये सब कैसे चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली. यस, इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से. अगर आपको समझना है ये तो मतलब लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल से. यस, आप अपना जो शेयर्स है वो खरीद या बेच सकते हैं. उसको हम बोलते हैं कि हमारे जो शेयर्स या डिबेंचर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए. ओके, इफ आई से दैट आई हैव 200 शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी, कैन आई सी इट? नो, बिकॉज दैट इज इन माई डीमैट अकाउंट. मतलब वो कहाँ पर है, मेरे डीमैट अकाउंट में. मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है डीमटेरियलाइजेशन फैसिलिटीज में. मतलब मैंने उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है. आई हैव कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ओके, सो दिस सर्विस इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय agency function, secondary function. Yes, next one is forex transaction. Forex means it is an abbreviation. Abbreviation means short form. Okay, short form हम बोलते हैं. Short form है किसका, foreign exchange. Forex is an abbreviation of foreign exchange. A bank may purchase or sell foreign exchange on behalf of clients. A bank purchases forex from its clients, which the clients receive from foreign transactions, and sell the forex when the client needs it for the overseas transaction. Means foreign import export हम बोलेंगे, या जो पैसे का लेन देन है वो भी सेकेंडरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक का. वो भी कमर्शियल बैंक करता है. ओके, नेक्स्ट इज यूटिलिटी फंक्शन. This is the second function of secondary function, that is utility function. First one is issue of drafts and checks. Yes, now we are done with agency function. Now the second we have switched to utility function. So what is it? It is issue of drafts and checks. A draft or check is an order to pay money from one branch of bank to another branch of same bank or the other. Means bank gives drafts or check that we can deposit or we can give to other person who is having account in some other bank. Okay, a bank issue drafts to its account holder as well as non-account holder, whereas check are issued only to the account holder. जो ड्राफ्ट है वो, सपोज मेरा अकाउंट है SBI में, तो मुझे ड्राफ्ट मिल सकता है. ठीक है, मतलब मुझे क्योंकि मैं अकाउंट होल्डर हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट है वहां पर, आई एम हैविंग माय अकाउंट इन SBI, सो आई कैन गेट ड्राफ्ट. बट इफ सम
another person is not having account in SBI, किसी और का अकाउंट नहीं है SBI में, फिर भी उसको वो ड्राफ्ट मिल सकता है. बट चेक के मामले में कैसा है कि मुझे, अगर मेरा SBI में अकाउंट है तो सिर्फ मुझे ही चेक मिलेगा बैंक की तरफ से, किसी और को इसका अकाउंट नहीं है उसको नहीं मिलेगा. Another person who is not having account in that same branch in SBI, he won't be getting check facility from SBI or same bank. Okay. बैंक चार्ज कमीशन फॉर इशूइंग अ बैंक ड्राफ्ट. यस, बैंक उसके लिए पैसे चार्ज करता है. नेक्स्ट वन इज लॉकर फैसिलिटी. इट इज दिस इज कॉमन यूटिलिटी फंक्शन ऑफ एनी कमर्शियल बैंक. द बैंक प्रोवाइड्स लॉकर फैसिलिटी फॉर सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा. लॉकर फैसिलिटी मीन्स एक लॉकर होता है कबर्ड की तरह. देयर इज अ लॉकर लाइक अ कबर्ड, बिग कबर्ड इट इज. Many lockers are there. One key is with you and one key is with bank. That locker can be opened only when both the keys are inserted in it. दोनों चाबियां जो है वो, उससे ही वो जो लॉकर है वो खुलता है. एक चाबी आपके पास होती है और एक बैंक के पास होती है. ये फैसिलिटी भी कौन देता है? कमर्शियल बैंक. ये सेकेंडरी फंक्शन है. उसमें आपकी जो भी वैल्यूएबल, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वसीयत है, गोल्ड है या कुछ भी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप वो लॉकर में रख सकते हो. यू कैन कीप योर प्रेशियस थिंग्स इन दैट लॉकर. दैट इज प्रोवाइडेड बाय यूटिलिटी फंक्शन, कमर्शियल बैंक, सेकेंडरी फंक्शन. यस. नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट. अ बैंक में प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड फिजिबिलिटी स्टडीज on behalf of the clients. Yes. Project report enable the business firm to obtain funds from the market to obtain clearance from government authorities. I'm reading it again. A bank may prepare project report and feasibility studies on behalf of clients. Means here it is they are saying that बैंक इज प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट. बैंक क्या बना रहा है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट. किसकी तरफ से? कस्टमर की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से. प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनेबल द बिजनेस फर्म टू ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम द मार्केट. यस. एंड टू ऑब्टेन क्लियरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज. जो हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गया है उससे हम लोगों से पैसा उठा सकते हैं, लोगों से पैसा ले सकते हैं, किसी और इंस्टीट्यूशन से पैसा ले सकते हैं. किसके बेस पर? वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेस पर. और अब हमको कुछ भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें क्या लगता है? गवर्नमेंट का परमिशन. वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हेल्प से हम गवर्नमेंट का परमिशन भी ले सकते हैं. यस. विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, client or customer can borrow money from public, borrow money from financial institutions and get clearance certificate, permission from government also. Okay. Next one is gift check. Bank issue gift check and gold coin to account holder as well as to non-account holder. Gift check, you know, like जो हम क्रिकेट देखते हैं, किसी को मैन ऑफ द मैच मिला, सपोज विराट कोहली. Okay, he got man of the match. He is the man of the match for that XYZ match. Okay, we see that big checks are there. Yes, क्या हम वो जाके डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में? नहीं, बट वो उस टाइम पे देते हैं. सपोज कि मैंने किसी को दिया है 1 लाख का चेक. ओके, तो वो बड़ा सा चेक होता है जो दिखता है, दैट इज गिफ्ट चेक. वी आर गिफ्टिंग अ चेक टू समवन. ओके, उसके बाद हमें जो रियल चेक है वो देना पड़ता है, बट दैट गिफ्ट चेक इज फॉर शोइंग. और किसी को कोई जैसे भी मैन ऑफ द मैच मिला है तो उस टाइम पे हम चेक देते हैं, राइट? तो वो क्या है? दैट इज गिफ्ट चेक. वी कैन गिफ्ट चेक टू समवन. दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय commercial bank. Secondary function is that, okay, that we can gift checks to our relatives, or if someone went somewhere. Okay, gift checks are gifted. Okay, it is given to account holders and non-account holders also. Gold coins are also given as a gift check by bank. We can have gold coins from bank. We need to pay for that, and bank will give us gold coin, and we can gift it to our relatives, friends, or
to whomsoever you want to gift. Okay, the gift check or coins can be used by the client for purchase of gifting on the occasion like weddings, birthdays, etc. Yes. Next one is underwriting services. The commercial bank may underwrite the issue of securities issued of companies. If the shares are not fully subscribed, the underwriting bank agrees to take up the unsubscribed portion of the securities. Yes, this is very important. I told you, sorry, we have learned it in the types of bank, industrial development bank. Remember what it does? Suppose हमने डिसाइड किया है कि हमारे 1000 शेयर्स बिकने चाहिए. We need to sell 1000 shares, but only 800 shares were sold. 1000 में से कितने shares हमारे बिके? Only 800. We need to sell 1000 shares, but the shares sold was only 800. What about that 200 shares? That 200 shares will be purchased by commercial bank. Means we will be getting money of that 200 shares also, because that 200 shares is purchased by commercial bank. Okay. हमें जरूरत थी पैसे की, इसलिए हमने हमारे 1000 शेयर्स बिकने के लिए निकाले. अब उसमें सिर्फ 800 शेयर्स बिके. 200 शेयर्स बिके क्या नहीं होता, हमारा लॉस हुआ, हमें पैसे की कमी है. तो वो जो 200 शेयर्स है वो कौन खरीदेगा? कमर्शियल बैंक. तो जो हमें पैसे मिलने थे वो मिल गए. यस, दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक. दिस इज नोन एज अंडर ऑफ शेयर्स. मीन जितने शेयर्स बिकने चाहिए थे वो नहीं बिके. The limit was of 1000 shares, but shares sold was only 800. So that underwriting was fulfilled by commercial bank. That difference 800 and 1000, 800 and 1000 difference was 200. So that 200 shares were purchased by commercial bank. Okay. Next is gold related services. Nowadays many banks are providing gold services to its customer. Banks are commercially buying and selling gold or gold ornaments from customer on large scale basis. Yes, whatever services are there about gold, that purchasing or selling, that service is also provided by commercial banks. Okay. So here we finish with the secondary function. Okay. Next is e-banking services. Now we learn about e-banking services. This is very important. So let us proceed. E-banking means electronic banking. Okay. E-banking stands for electronic banking. It is also called as virtual banking. E-banking is the result of the development in the fields of electronics and computers. Yes. E-banking means banking through electricity. We can say banking through electronic gadgets. Okay. Under e-banking, the banking operations are computerized. Some of the elements of e-banking are banking operations are computerized. Means we are doing banking with the help of laptop computers. Okay. Let us see. First one is automatic teller machine, ATM. Many children says that full form of ATM is all time money. No, the full form of ATM is automated teller machine. So let us see what about it. The ATMs are electronic machines which are operated by the customer on his own to withdraw or deposit money. Yes, we can withdraw money from ATM and we can deposit from ATM. Yes, so that functions are comes under e-banking. We are doing banking through electronic gadgets. Okay, electronic machines. Okay, we are depositing money from electronic machine and we are withdrawing money from electronic machine. That is ATM. It can be used for other banking transaction also, such as bank inquiry. Yes, you can inquire your balance from ATM. We can say mini statement. We use that function. Yes, you can inquire your balance. You can transfer money. You can request for checkbook or bank
statement, etc. Yes, all these services are provided by ATM. Nowadays, ATM also provide facility of cash deposit through CDM, that is cash deposit machine. Yes, cash is also deposited in ATMs. There are different machine for depositing cash, but it is also provided by ATM, electronic machines. Yes. Next one is credit cards. Sorry, credit cards. Yes, credit card is also comes under e-banking. A credit card is a payment card. It allows the card holder to pay for different transactions he performs. The issuing bank creates a revolving account and grants a line of credit to the customer or user. Credit card offers convenience to customer as customer needs not carry cash. Yes, means customer don't need to carry cash. We can swipe that card and we can purchase whatever we want to purchase. If we are going into mall, okay, we are going in a mall, we can swipe credit card there and we can purchase clothes or anything from there, okay, with the help of credit cards. The system of credit card is that we don't have money in our account. We can swipe that. Suppose the bill is 10,000 rupees. I purchase some clothes, and the bill is 10,000 rupees. I can swipe that credit card, and I will pay that money to bank afterwards. Okay. And what about debit cards? Most of the banks nowadays offer debit card as soon as account is opened by account holder. Yes. Through debit card payments, the amount gets deducted from account holder's account. Some bank offer personalized debit and credit card as per the requirement of the customers. Yes. For using debit cards, we need to have money in our account. If I am having only 5,000 rupees in my account, I cannot swipe debit card for 7,000 rupees. Okay. I am having 5,000 rupees in my account. I can withdraw only 5,000 rupees. Okay, I cannot withdraw more than that. But if I have credit card, I can withdraw more than that. Okay, credit means udhar. I'm taking credit from bank. Okay. So we'll see RTGS in our next lecture. Okay. So today we saw about. Give me a minute. Okay. So today we saw about secondary function. Yes, secondary function of commercial bank. We are done with commercial bank now, okay? We are done with functions of commercial bank. I'm telling you again, it is very important, children. It is very much important. It will surely come in your exam, okay? So do study it. It is very confusing. Types of banks and functions of commercial bank. It is very confusing. Try to learn it, and if you have any doubt, please ask me for that. Okay. We saw secondary function today. We learned about secondary function. In that, we learned about agency function and utility function. Yes. We have also started with elect e-banking. Yes. We also started with e-banking today. In that we saw what are electronic machines we are using, like for e-banking. Yes, what electronic banking we are doing, or what all things we are using for e-banking. That we saw ATM, then credit cards and debit cards, right? In our next lecture, we'll learn more about e-banking, okay? Please ask out to your teachers. Don't hesitate. And this chapter is very much important from your exam point of view. Okay, children? So, hope you all are doing well. Okay? Study hard, eat well, stay healthy, and stay safe. Stay home and study.